हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर निफ्टी बैंक निफ्टी लाइव एनालिसिस। इस सेशन में हम क्विकली जानेंगे कि लास्ट 3 घंटे में मार्केट में क्या हुआ और आने वाले क्लोजिंग टाइम ऑफ द मार्केट नेक्स्ट 2 आवर्स मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकता है। इसके साथ साथ ऑप्शन डेटा के थ्रू इंपॉर्टेंट लेवल्स भी हम मार्क करेंगे ताकि हमें ये पता चल जाए कि निफ्टी अगर ये इंपॉर्टेंट लेवल ब्रीच करता है तो एक अच्छे ब्रेकआउट चांसेस हम ले सकते हैं। सो लेट्स गेट गोइंग। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो चार्ट है वो है निफ्टी का आर्ली चार्ट और इस आर्ली चार्ट पे वन थिंग इज वेरी क्लियर, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन जो निफ्टी के लिए बना हुआ है इज समवेयर अराउंड 17,770. So 17,770 is a very strong resistance zone for Nifty on the hourly chart as well. And same way, if I try to see the important support zone, so this becomes our resistance zone. And if we try to see strong support zone, which is obviously Friday's low, where it made the low and then it has quickly bounced back, which is very, very important support zone for Nifty. More than that, yesterday's high, जो कल का हाई है वो भी उस निफ्टी ने आज गैप अप ओपन करके ऊपर चला गया है। सो कल का हाई और कल का जो जोन है हाई will act now like resistance, will now become support. So this will act like a strong support zone for Nifty even going forward. So आगे के दिनों में भी ये जो जोन है अराउंड 550 17,550 का जोन भी काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल बनेगा। तो क्विकली ये चेक करते हैं कि ऑप्शन डेटा हमें क्या बता रहा है। ये टेक्निकली हमें ये क्लियर हो गया कि डाउन साइड सपोर्ट इन दी गैप रीजन में है और एक अपसाइड रेजिस्टेंस 17,750 के जोन में है। अब मैं ये करता हूं कि यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम पे जाके एक ऑप्शन डेटा किस तरह से परफॉर्म कर रहा है ये अपन चेक करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डेटा मुझे किस तरह से दिख रहा है, लेट्स चेक दैट। तो 7 अक्टूबर की एक्सपायरी एंड इन 7 अक्टूबर में ये दिख रहा है कि 17,600 17,600 में 17,600 में 55,000 people are standing. That means 17,600 will be a very strong support zone. So this zone is very, very important because there are almost 55,000 people which is present, plus 25,000 if you see is around 650 zone. So 600 and 650 are very, very important. So 600 and 650. So let's quickly mark 600 and 650, which is somewhere around here, which has been a turning point for Nifty from the bottom. So one thing is now very clear. We can say that, okay, fine, this zone, horizontal line, we can mark around 650 zone and around 600 zone. They are critically important zones. So one and the around 600 zone, which is obviously the bottom of today, are more or less very important support zones. So these are good support zones for Nifty as per the option data also that we saw right now. That option data is also suggesting a strong support zone over here. Plus, if Nifty starts going up again, it can travel all the way to the top towards the day high. So afternoon market के लिए अगर देखा जाए, अगर Nifty more or less 17,700 के ऊपर sustain करता है, so it can go all the way towards the top. So आज का high जो है, it can go all the way towards the high in the next 1.5 hour, 2 hours or so. So strong support zone around 650 zone where a strong reversal pattern has happened, and more or less when it sustains above the red candle. So this is the red candle or the selling pressure जो आया था वो 700 पे आया था। तो अगर यहाँ पे more or less market थोड़ा नीचे भी आता है और sustain करके ऊपर भी जाता है, so it can travel all the way towards the top. So let's wait and watch. If it can sustain around above 700 or so, then there can be a good rally on the upside for Nifty. Same way, Bank Nifty को भी track करते हैं. So first thing, let's go on the hourly chart of Bank Nifty. So hourly chart में भी same way like how Nifty was there, more or less हमें same चीजें दिखती है। यहाँ पे strong support बना हुआ है bottom में, उसके साथ साथ जो कल का high और gap zone है, which will act like now a good support zone for Bank Nifty going ahead. Now talking about resistance on the upper side, it is very clear. Multiple times यहाँ पे ये zone से selling आई भी है Bank Nifty में. So one thing is clear on Bank Nifty, we can say roughly around 38,000 or you can say 37,900 is the zone of resistance, and same way on the bottom side 37,300 will act like strong support zone. Now this is technically what we are able to achieve or understand
let's go and also check on the option data point of view what is shown in that part as well. So यहाँ पे अगर मैं options data भी लेता हूँ, market more or less अभी 17,600 चल रहा है. So quickly, if I go towards the option data, 17,600 से क्या हमें पता चलता है? 7th October, I can say clearly 37,500 में strong support zone है. So 37,500 will be a key support zone for Bank Nifty. So आज अगर Bank Nifty 37,500 के नीचे नहीं जाता है, so it can go higher. That's number one. So 37,500 is acting like support. अगर 600 के ऊपर जाता है, so it can go higher, but थोड़ा resistance रहेगा if it goes higher because it is not number of people standing. यहाँ पे आप देख सकते हैं 28,000, 38,000 people are standing at the top. So काफी pressure रहेगा Bank Nifty को perform करने में. Vis-a-vis Nifty को perform करना will be very easy compared to Bank Nifty. So if Bank Nifty sustains above 37,500, अगर Bank Nifty 37,500 के ऊपर sustain करता है, so let's quickly mark that zone. 37,500 is exactly that point from where the reversal has happened. हाल ही में जहाँ से reversal आया है Bank Nifty में is around that 37,500. So it is very clear if it sustains above the zone and plus on top of that, if it goes above the selling point. So if you see over here above the selling point, this is very, very important. And this zone can be acted like a strong selling point. Prior selling point was there on Bank Nifty from this area. Here it took a bounce and then again selling took place. So this is a very strong selling point, 37,630. So if Bank Nifty has to sustain above this for another rally on the upside, but downside good support is there at 37,500. So अगर बैंक निफ्टी को नीचे जाना है उसको 37,500 के नीचे सस्टेन करना होगा और अगर वो 37,500 के नीचे सस्टेन करता है तो ही आपको दिखेगा कि बैंक निफ्टी और नीचे जा सकता है. Otherwise we don't have to be worried about Bank Nifty going down. So I feel Bank Nifty can also give you a breakout on the upside because it has taken a strong support at 37,500 और option data भी हमें वही बोल रहा है. इसके साथ साथ अगर इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो डे हाई पे ये भी चला जाएगा. But upside in Bank Nifty can be limited as we saw. ऊपर में 700, 800 के जोन में अगर हम देखें यहाँ पे जो है 800 का जोन और 700 का जोन, यहाँ पे भी थोड़ा Bank Nifty को रेजिस्टेंस मिलेगा. But upside is there. And same way if I go for Nifty, जो हमने समझा, Nifty में chances are much better for a good upside, and we can see as we are talking, it is sustaining above 700. So sustaining above 700 can go all the way towards the day high very, very easily towards the closing. So after a good correction, market seems to be bouncing back, and if it sustains near the high and it closes near the high, अगर Nifty higher zone में close करता है, so कल भी upside rally Nifty Bank Nifty में मिल सकती है. Overall, compared to Bank Nifty, Nifty seems to be stronger. Thank you very much for watching. Connect again tomorrow.